Hi everyone, namaste, welcome back to my channel and I am back with my makeup basic series। और ये सीरीज़ में मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो बहुत दिनों से मैंने इस सीरीज़ में कोई वीडियो नहीं बनाई थी। सो आई थॉट ओके लेट्स डू अ वीडियो ऑन दिस सीरीज़ बिकॉज आप लोगों का रिस्पॉन्स इस सीरीज़ में बहुत अच्छा है। आई कांट टेल यू हाउ blessed and how happy I feel when you guys comment below that you liked the technique and you actually understood how to do the makeup. So as you can see from the topic, from the title, that आज का जो topic है वो है कि आप एक केकी फेस कैसे अवॉइड कर सकते हैं, how you have to apply the foundation to avoid cakey face. So थोड़े से जो steps हैं, it's very similar to the foundation application video in my makeup basic series. If you want to watch it, I will be linking it down in the description box, आप देख सकते हैं। but थोड़ा सा आपको मैं like comparison video बताऊंगी कि if you do a foundation with that technique and if you don't do the foundation with that technique, so क्या डिफरेंस है, कैसे आपके फेस केकी बन जाता है और कैसे आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। सो इस सीरीज़ की जो वीडियोस हैं वो थोड़ी सी लंबी होती हैं मेरी नॉर्मल वीडियोस से अगर आप कंपेयर करें। सो प्लीज़ bear with me. I love to explain each and everything, but if you don't wanna watch such big videos, then you can just fast forward it and go to the actual technique. बाकी जिन लोगों को मुझे सुनना पसंद है और मुझे बोलते हुए देखना पसंद है, वो they can continue watching it. So let's get started. I have a moisturized face. So सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए आपका कि आपका जो फेस है अच्छे से क्लीन हो एंड मॉइस्चराइज्ड हो। whether you're oily or you're dry skin or combination, you should have a moisturized skin. I'm combination, but जैसे कि आप देख रहे हैं वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा मेरी स्किन ड्रायर साइड पे जानी शुरू हो जाती है इस टाइम पे, बट बेसिकली आई एम कॉम्बिनेशन स्किन। आई हैव मॉइस्चराइज्ड इट। इसके अलावा मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है अभी। सो एक साइड पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए और एक साइड पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या नहीं करना चाहिए। सो या इट इज़ मोर ऑफ लाइक अ फाउंडेशन डू एंड डोंट्स एज वेल। सो जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो मॉइस्चराइजेशन के बाद जो स्टेप है दैट इज़ प्राइमर। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई प्राइमर ऑन वन साइड ऑफ माई फेस और एक साइड पे मैं नहीं लगाऊंगी, सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस। सो आई एम टेकिंग बैक पोर प्राइमर। इट्स अ वेरी गुड प्राइमर। आई लव यूजिंग दिस प्राइमर। सो इसकी मैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लूँगी बिकॉज आई जस्ट हैव टू कवर माई हाफ ऑफ माई फेस, सो दिस इज़ इनफ फॉर दैट। So I'm just gonna put on my face. I'm gonna blend it really nicely. Especially जहाँ पे pores की problem है, I'm just gonna concentrate a little bit more there. So इस तरफ मेरा primer लग चुका है and इस तरफ पे कुछ नहीं है। Now let's come to the foundation. So for the foundation मैं use कर रही हूँ Cakey liquid foundation and I'm using the shade 3.0. I have a full detailed review about this foundation. अगर आप देखना चाहते हैं I will be linking it down in the description box. Go ahead and see. So जो सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अगर आपका केक फेस होता है ज़्यादा, that you don't have to use a brush. Brush will always give you more coverage and more thick layer on your skin, and so you really have to use a beauty blender अगर आपको केकी फेस अवॉइड करना है। आई लव यूजिंग ब्रश। आपने देखा है कि ज़्यादातर आई लव यूजिंग ब्रश ऑन माई फेस, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। बट इफ़ यू आर न्यू टू मेकअप, आई वुड सजेस्ट यू टू यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। यस, बहुत से लोग अभी भी मुझसे पूछते हैं कि वेट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। सो ये गीला होना चाहिए, अच्छे से पानी निकला होना चाहिए और गीला होना चाहिए। सो आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन। सो फर्स्ट थिंग वाज प्राइमर एंड द सेकंड थिंग वाज ब्यूटी ब्लेंडर। सो लेट्स कम टू द थर्ड थिंग, दैट इज़ फाउंडेशन। फाउंडेशन आपने कम से कम यूज़ करनी है इफ़ यू डोंट वांट केकी फेस। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे ऑब्वियसली दैट विल लीड टू अ केकी फेस। सो आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल बिट फाउंडेशन ऑन टू माई स्किन और इसे मैं इस तरह से लगा रही हूँ एंड आई एम जस्ट applying to the half of my face, also covering my eyelids because I have pigmented lids. So I'm just gonna take this beauty blender. I'm gonna start blending. जो आपने फाउंडेशन ब्लेंड करनी है, जैसे कि मैंने अपनी फाउंडेशन एप्लीकेशन वीडियो में भी बताया, वो आपने ब्लेंड करनी है कम से कम 2 मिनट के लिए। Yes, the more you blend, the more flawless your skin will look, the more less cakey your skin will look, and the foundation will actually looks like your skin. So I'm just gonna blend it really well, at least for 2 minutes.
And if you want to see how to blend with a beauty blender, go check it out, how to apply foundation video, जो कि है मेरी. And I've said that कि हमेशा आपने stamping motion में लगाना है foundation, ताकि वो अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाए. एंड wherever you need more coverage, especially around your nose or under eyes, if you're not using concealer, आपने पहले इस तरह से पूरी फाउंडेशन लगा ली हल्के से, एंड you'll keep on blending. एंड जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है you need a little bit more coverage, थोड़ी सी फाउंडेशन you can pick it with your beauty blender and concentrate where you feel the actual need. Like मेरे eye area के around I need a little bit more coverage because obviously I have dark circles, and also nose area के around. And wherever you need more coverage, just press the foundation really into the skin, like, you know, wherever you need more coverage, press really nicely. Wherever you have any spots, just press really nicely. So you can see कि इस तरफ वाली जो फाउंडेशन है एकदम मेरा स्किन का पार्ट लगना शुरू हो गया है. The more I will blend, the more skin feel it will give me. और मुझे बिल्कुल इस तरह से नहीं लगेगा that I'm wearing any foundation, because it will cover my skin but it won't look like foundation that I have foundation on. बहुत मैंने blend किया है. So the next, so here I'm just gonna apply the foundation and I'm gonna blend less and I'm gonna blend it with my brush. अगर आप brush से भी ज़्यादा देर blend करेंगे you will obviously get a really nice result, but कई लोगों को brush use करने में अभी भी problem होती है, so उनके लिए better है that they should use a beauty blender because that gives much more flawless look. So brush के लिए I'm using my Pack 003. It's a very good brush, but I'm just gonna blend for lesser time. Alright, so I have blended it for lesser time and you can still see that थोड़ी सी foundation अभी भी है, but here you can see that my skin is like really flawless. So how much different it makes if you blend really nicely. Alright, now let's come to the powder. So for powdering my face, I'm using Pack baking powder palette. Really good palette, love it. It's so good, I can't tell you how good it is. So I'm just gonna use the white powder because इससे एकदम से instant highlighting effect आता है face पे. So what you have to do if you don't want cakey face, again use your powder with beauty blender. So I'm just gonna take some, और ये बहुत आपने थोड़ा सा लेना है, and you just have to set your foundation with it. And आपने ये ही पाउडर तब तक यूज़ करना है जब तक आपके ब्यूटी ब्लेंडर में आपको पाउडर दिखना बंद नहीं हो जाए, और तभी आप अपना नेक्स्ट पाउडर उठाएंगे इससे. जब तक ब्यूटी ब्लेंडर में नेक्स्ट लाइक इस तरह से बिल्कुल पाउडर दिखना बंद ना हो जाए. सो आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल बिट मोर. सो इस तरह से आपका ब्यूटी ब्लेंडर दिखेगा, बट आपने फिर से पिकअप नहीं करना है जब तक इट्स नॉट यू नो all gone, and press it really into the skin, like into the skin. So yeah, that's how I'll do it. And now I'm just gonna take a tissue paper and I'll just wrap my beauty blender with it. इससे क्या होगा, whatever excess foundation you have on your face and excess powder you have on your face, वो जो है वो सब टिश्यू पेपर पे आ जाएगा, और आप देखेंगे कि बहुत हल्का सा ही आएगा बिकॉज आपने अच्छे से प्रेस इन किया है. जो भी प्रोडक्ट आपने अपनी स्किन पे लगाया है वो अच्छे से प्रेस इन आपने अपनी स्किन पे किया है, तो बहुत कम प्रोडक्ट ही आपको आएगा, और जितना भी एक्सेस होगा वो टिश्यू ले लेगा. और इससे क्या फ़ायदा होता है, आपकी फाउंडेशन जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करती है, एंड इट actually feels like your skin, it looks like your skin but better. So this is what I have on tissue. Not much, oops, it's all gone. Not much, but my skin looks flawless. It's not cakey at all. So here I'm just gonna use powder just with a brush, and I'll not just I'll not press, just randomly करूँगी, और आप देख सकेंगे कि cakiness आनी start हो जाएगी. Alright, I can actually see in the mirror that this side is looking more cakey than this side. I don't know whether you can see or not. I'll try to zoom in and show you guys कि कैसी लग रही है मेरी skin. But definitely this side skin is looking more just like my skin, and this side of my skin is looking more of like a made up skin. यहाँ पे पता चल रहा है that actually I have makeup on. I have put on the makeup, but here
it's not obvious that I have makeup on. So that's the difference basically. So I'm just gonna show you real quickly by zooming in. So I hope the camera is like justifying the actual look. So the right side of my skin is a little bit cakey, looks a little bit cakey, but the left side looks the actual skin. I'm not saying कि brush से makeup नहीं करना चाहिए. I love doing it with brush, but the key is to blend more, like to blend at least for 2 minutes and to press the product really into the skin. जितना आप blend करेंगे उतना flawless आपका makeup लगेगा, उतना ही आपका जो base है वो non cakey रहेगा. So the key is this. So I just wanted to explain this thing to you guys. So I'm just gonna do my whole face makeup quickly and I'll be right back. So guys, I'm back with my full face makeup. I have just some eyebrows, have a little bit blush going on, not much, and the lipstick. So yeah, and of course mascara. So this is how my face looks like. As you can see, this side of my face is looking much more flawless. I really don't know whether the camera is doing justice or not in showing the actual thing, but this side of my face, as I can see in the mirror, that this side of my face looks more of my skin, but this side of my skin looks more of like made up, or you know, more of like a makeup kind of thing. So I'll just give you another up close with the makeup as well कि किस तरह से मेरी skin दिख रही है. And definitely I'm loving this side much better than this side. So this was like a quick thing to do and very easy thing to do to avoid cakey face. And if you are going to some, you know, wedding party, of course you can use brushes to have that full coverage, and you can use a lot of powder to bake your face. But if you are going like if you are doing your makeup for regular office thing, or या फिर आप कहीं भी जा रहे हैं like party वगैरह में, और you don't want to look too made up, then you can obviously use this technique जो कि बहुत ही अच्छी flawless look देगी. So yeah, that's what I have to say about it. So let's recap what you have to do to avoid cakey skin. The first thing is the primer. The second thing is using a beauty blender over a brush. The third thing is to use lesser foundation and not building up too much product. Fourth thing is that you have to take a tissue with your beauty blender and, you know, apply all over your face to get rid of excess foundation. And fifth thing is that you have to use powder by pressing motion and wherever you need most, and you know, not taking too much product. So yeah, these are the 5 things you really have to take care. जो कि tissue वाला part है, you can do with the foundation, you know, or you can do with the foundation and powder. That's totally up to you. I wanted to do with powder because I wanted to get rid of the excess powder as well to avoid all the cakiness. But it works totally fine अगर आप foundation के बाद भी एक टिश्यू से अपना beauty blender wrap करके excess foundation अगर आप हटा लें तो वो भी it works fine. So that's totally up to you how you want to do it. You can, you know, just interchange these steps. Yeah, so that was it. You can just avoid cakey face using these 5 steps, and it's very easy. You can you know, use these steps easily into your daily routine. कुछ ज़्यादा इसमें टेक्निक नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, and you will have a flawless face using all these things. So yeah, that's it for the video. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये छोटी छोटी टिप्स अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और ये हेल्प करेंगी आपको. एंड लेट मी नो आप और इस सीरीज़ में कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, because I just love the response for the series, and yeah, I really want to make more and more videos in this series. So please let me know whether you want to see foundation do's and don'ts. Of course this was kind of foundation do's and don't, but मैं और भी चीज़ें आपको दिखा सकती हूँ जो कि foundation में आप do's and don'ts में कर सकते हैं. So yeah, do you want to see that? Do you want to see eyeshadow do's and don'ts? How to wear liquid lipstick? Let me know what next you want to see in this series. So yeah, that's pretty much it for the video, and I will see you guys in my next video. And if you're new to my channel and haven't subscribed my channel yet, then please do hit the subscribe button and the bell icon and help me grow, and I will see you guys in my next video. Till then, stay beautiful and stay healthy. Bye bye.